हेलो फ्रेंड्स, का फिर से स्वागत है। मैं आज हूँ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में और आज हम जा रहे हैं ब्लू माउंटेन टूर के लिए और आपको लेटेस्ट अपडेट देते रहेंगे ब्लू माउंटेन टूर्स में क्या क्या है वहाँ। आप सब लोग हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुँच सके। तो आज दिखाते हैं आपको ब्लू माउंटेन टूर में क्या क्या है। ये हमारा फर्स्ट स्टॉपेज है। यहाँ फीदरडेल वाइल्ड लाइफ पार्क है, ये हम देखेंगे। यहाँ के जो कोआलाज हैं, कैंगरूज हैं, ये हमें देखने को मिलेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टॉपेज है फीदरडेल वाइल्ड लाइफ पार्क का। लगभग हमें यहाँ पर 1 घंटे का समय मिला है कि हम इसको देख पाएँ। इसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। ये एंट्रेंस है इस वाइल्ड लाइफ पार्क की। देखते हैं क्या क्या मिलता है यहाँ पर। Kangaroo. ये कैंगरू है। यस कैंगरू। ये कैंगरू देखिए। अब पेलिकन्स, कोआला, ओके कोआला भी मिलेगा अभी हमें। कल भी हमने काफ़ी कोआलास देखे थे बट स्टिल वो पेड़ पे बैठे हुए थे। मे बी अब हमें कोई नीचे कोआलास भी मिल जाए। पेलिकन्स, कुछ फैक्ट्स हैं यहाँ पे। ये पेलिकन से अब हम जा रहे हैं कोआला एनक्लोजर, कोआला इंट्रैक्शन के लिए। क्यूट है ये देखिए। ये 24 में से 20 घंटे सोते हैं। ओह वाह, ये खाता हुआ मिल गया हमें। खाने में मस्त है ये। ओह माय गॉड, सो क्यूट। देखिए एक बार, मैं क्यूट है ये। पेंगुइन्स देखिए इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। पेंगुइन्स, सो क्यूट पेंगुइन्स, बहुत ही प्यारे जानवर, बड़ा ही क्यूट पेंगुइन्स है ये। सो क्यूट पेंगुइन्स।
ब्यूटीफुल, isn't it? Heaven on earth. See? की एंट्री है यहाँ से। ये रोपवे से दूसरे एंड पे जाएंगे और आगे से वहाँ पे 60 डिग्री पे ट्रेन चलती है, उसका आनंद लेंगे। तो ये सीनिक वर्ड है। वी आर वेटिंग फॉर आवर टर्न। हम अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि ये इस रोपवे पे हम उस छोर तक पहुँच पाएँ। ये सीनिक वर्ड है। हम ये रोपवे पे हैं और देखिए कितना नीचे गहराई है, कितना ऊपर है हम। You have the restaurant to the right hand side, also a water station in the corner. Head down the stairs to the cafe for any hot or cold beverages, also a viewing platform out there. And down at the bottom level, level 1's all where all the fun's at. You have the world's steepest railway and the Kenway. Also the retail shop, if anyone needs to do some retail therapy. हाँ, ये ट्रेन है जो 60 डिग्री एलिवेशन में चलती है। देखते हैं कितना डर लगता है। ये तो गुफा के अंदर चली गई, अंधेरा ही अंधेरा है चारों तरफ, कुछ नहीं पता लग रहा। ये निकली गुफा से बाहर। ये देखिए, ये देखिए ट्रेन कैसे चल रही है। एंगल देखिए इसका, एंगल 60 डिग्री के एंगल पर नीचे जा रही है। डर बिल्कुल नहीं लग रहा, लेकिन रोलर कोस्टर में बैठ चुके हैं। ये देखिए किस एंगल में नीचे जा रही है, 60 डिग्री के एंगल पे। सामने जो आपको ये पर्वत दिख रहे हैं वो 3 चोटियों को 3 सिस्टर माउंटेन बोलते हैं। 3 बहनों जैसी वहाँ पर आकृति है। थोड़ा देर यहाँ पर घूमने के बाद फिर हमने दोबारा से वापसी की इसी ट्रेन में ऊपर जाने के लिए, और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था, काफ़ी मज़ा आया। बहुत ही इसको वर्ल्ड का स्टीपेस्ट रेलवे बोलते हैं। ट्रेन बहुत ही ज़्यादा स्लोप में नीचे आती है, पर डर बिल्कुल भी नहीं लगता है इस रास्ते में। आप जब इस ट्रेन से नीचे आएंगे उस पहाड़ से नीचे तक, तो बिल्कुल भी एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं डर लग रहा हो। ये देखिए अब ये ट्रेन वापस जा रही है ऊपर उस पहाड़ की चोटी पर। दोबारा वही ट्रेन वापसी जाती है बैक उससे, जैसे वो नीचे आई ऐसे ही ऊपर जा रही है वापस। थोड़ा सा पकड़ना, होल्ड करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी कोई डर वाली बात हो। बहुत ही सेफ है, चारों तरफ से कवर्ड है ये ट्रेन क्या छोटा सा एक डब्बा है, एक बोगी सी है, लेकिन इसको वर्ल्ड स्टीपेस्ट रेलवे बोलते हैं क्योंकि वहाँ पर जगह जगह लिखा हुआ था कि वर्ल्ड स्टीपेस्ट रेलवे। और अच्छा एक्सपीरियंस था, मज़ा आ रहा था। सभी लोग थे देश विदेश से यहाँ पर, और काफ़ी लोग यहाँ विजिट करते हैं। अच्छी जगह है, अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है।
चांद बहुत ही साफ। कुछ नहीं दिख रहा है, रात बहुत हो चुकी है। और ये देखिए टेनामाटा रिवर, आई थिंक ऐसी ही शायद नाम है इसका, इसी तरह नाम था इसका। और ये रात का नज़ारा है। देखिए रात में ऑस्ट्रेलिया किस तरह दिखता है। यहाँ रात बड़ी जल्दी हो जाती है, अभी 6 भी नहीं बजे हैं पूरे, और कितना अंधेरा हो चुका है। और जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं अंत तक, सब्सक्राइब करें हमारे नए वीडियोस के अपडेट के लिए। ज़रूर और ज़रूर प्रेस करें बेल आइकन का, और ताकि हमारे अपडेट आप तक मिलते रहें।